वेलकम बैक MS-CIT इरा सेशन नंबर 37 में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे सेशन नंबर 37 के बारे में। तो उसका नॉलेज चेक टेस्ट फर्स्ट है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन preserving our memories and telling our stories. इसका आंसर है सी, memory albums. Next question, click on the dash option to download and edit a template in the offline version of Microsoft Office. तो इसका आंसर है ये, download. Next question, you want to create a photo album using Microsoft PowerPoint but do not have a clear idea about it. Which of the following will you choose to create your presentation in? So इसका आंसर है बी, ready-made template. Next question, which of the following displays a photo album? तो इसका आंसर है सी, ये वाला. Next question, you are creating a photo album using Microsoft PowerPoint. You do not like the default font color that is used in the template and want to change it. What will you do? इसका आंसर है बी, change the font color. Next, session number 37, knowledge check test 2 के question answers. तो first question है, the a book is the book of directions which communicates the ingredients and produce a chef uses to make his creations. इसका आंसर है बी, recipe. Next question, identify the steps involved change a picture. A, right click and change picture. Next, option allows you to recolor a text. इसका आंसर है ये, font color. Next question, which tab of the menu bar has the crop option? इसका आंसर है डी, format. Session number 37, knowledge check test 3. आसना AI टूल के ऊपर क्वेश्चंस आंसर्स है. आसना AI validations mainly ensures. इसका आंसर है ए, task completion. Next question, knowledge check test for LM Arena.Ai TryHackMe AI tool के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है. What is the TryHackMe primarily used for? इसका आंसर है ए, learning ethical hacking and cyber security. Next question, which of the following is a common cyber security concept covered in TryHackMe? इसका आंसर है बी, penetration testing. Next, session number 37, cell path learning test about memory album and recipe book के ऊपर क्वेश्चन आंसर है. So first question है, how will we change the captions? Choose the correct steps. इसका आंसर है A, select the text, delete the text, enter new text. Next, choose the correct tab to insert image in your presentation. So इसका आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे ये वाला. Next question, session number 37, session completion test. So first question है, which of the following best describes communications? इसका आंसर है डी. Next question, which of the following is an example of online communication? इसका आंसर है सी. Next, question number 3, sending message to a friend using a mobile phone is an example of. इसका आंसर है ए, communication. Next question, connectivity allows the exchange of information over which type of network? इसका आंसर है ए, internet, mobile networks और local Wi-Fi. Next, question number 5, which of the following is required to make a video call with a friend? So इसका आंसर है ये, good internet connectivity. Next question, what is the main difference between communication and connectivity? इसका आंसर है बी. Next question,
A business manager sends an urgent email to a client. This is an example of communication through. इसका आंसर है A. Next question. How does technology-based communication, such as managing apps, uh, differ from face-to-face communication? Select two options. Answers करना है. तो ए बी सी डी में से हमें ए और सी आंसर सिलेक्ट करना है. ये दोनों ऑप्शंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग a live video class, the teacher voice is clear, but the video of the whiteboard is blurry. What is the most likely technical reason? इसका आंसर है सी. Low internet bandwidth or poor connectivity affecting video quality. Next question. And last question. A school in a rural area gets a new internet connections, but it works only in the principal's office and not in classrooms. What is needed to enable communication across the school? इसका आंसर है बी. Connectivity infrastructure such as Wi-Fi router is classrooms. तो ये था सेशन नंबर 37. तो हमने सेशन कंप्लीशन नॉलेज चेक टेस्ट, सेशन कंप्लीशन टेस्ट, ये टूल के ऊपर के नॉलेज चेक टेस्ट एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट के बारे में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखकर आप आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. माइनस मार्किंग है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ पर देखकर आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए. रुकते हैं तब जब तक. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.